Here, warmly welcome you all, where we will going to pursue ahead this market equilibrium, a break-even point where we have merging of lines of two forces, supply and demand, which determines the purchasing power to production cost mechanism recovery. So warmly welcome you if it marks the negative influence of shift, decrease, and equilibrium, a state of balance and rest for buyer and seller, where they intersect with a resting point and break-even point of price and quantity manufacturing here. Market equilibrium, price and quantity equilibrium, chain effects, because it is a series of the influence of demand and supply, and this time it is done as a although together, so called simultaneously. Every action of a buyer has a supplier reaction. Every initiative of a supplier marks the influence on the buyer. Here, we will discuss the price and quantity equilibrium, and we will mark the shifts of demand and supply is equal to each other, and in the case of simultaneously chain effect we are discussing the decreasing phase. Assembled, and this time it's market equilibrium under perfect competition. And today I have given one explanation I have to deliver, and hereby I'm starting it with this point that we will discuss situation number 5. Situation number 5. This is situation number 5 which we will discuss, where we will have decrease in both market forces, and it is equal. It is equal to each other. It is equal to each other. Simultaneously chain effect we will talk about. Situation number 5, which says decrease in supply is equal to decrease in supply and decrease in demand. So it marks you with this phase, and this phase has an equilibrium condition. And here we have to answer one question कि how do the market equilibrium get influence of the market forces. अब बताना है डिमांड एंड सप्लाई का जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो कैसे फॉर्म होता है इन्फ्लुएंस से. किस चीज का इन्फ्लुएंस वी आर डिस्कसिंग टुडे. डिक्रीज इन सप्लाई इज इक्वल टू डिक्रीज इन डिमांड, एंड दिस इज द कर्व. Look, on y-axis we have rupee, on x-axis we have quantity, and we have price and quantity. And let's check it out, the phases. The first phase says find out the original curves, and the curves supply curve original we have, demand curve original we have. I have checked out supply original and demand original. They both are intersecting at one point. This is original equilibrium. So look, already solved one query. Now we have leftward shift of supply, decrease in supply and decrease in demand. Both are shifting leftward. And beta, I utilize the word is equal to. Always remember, जैसे ये लाइन है ये हमेशा इक्वल आएगी बेटा. ये मैंने थोड़ी इसीलिए एक्सटेंड करके दिखाई है आपको. ये हमेशा इस और इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगा. इसीलिए बेटा मैंने ये आपको डॉटेड लाइन जो दी है ये थोड़ी सी तिरछी दिखाई है, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए. सो नाउ वी विल यूज डस्टर एज वेल फॉर योर ब्रॉड प्रेजेंटेशन. देखो मैम ने जैसे इसे कंस्ट्रक्ट किया है ना, इसे कंस्ट्रक्ट करने का तरीका बता रही हैं आपको कि आप इसे फॉर्म कैसे करेंगे. लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो मैम ने आपको दिखा दिया कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहाँ होता है, बैकवर्ड होगा. अब मैं इसे आपको एक ऐसे तरीके से फॉर्म करने के लिए समझाऊंगी कि इसे हम लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं. इसलिए मैंने ओरिजिनल लाइन रखी, और अब देखो चार्ज. लुक, आई हैव यूटिलाइज्ड द चॉक
देन अगेन आई हैव यूटिलाइज द चॉक. देखो दोनों साइड का डिस्टेंस देख लीजिए आप अपनी फिंगर से. वी हैव कवर्ड, तो आपकी ये मार्क आ जाएगा और ये मार्क आप इधर से चेक कर लेंगे. तो इट शुड बी इक्वलाइज. देखो, तो नाउ वी विल गोइंग टू ड्रॉ लाइन. दिस इज S1, दिस इज योर S1. एंड इन द सेम वे अब हमने यहां से मार्क रखा था, तो नाउ वी विल ड्रॉ लाइन. Now even sometimes the scholars used to do one thing more. They used to look at two equilibrium point on one and then forms it out. That's also, but that didn't shown very good technique because we are not utilizing the proper one. But आप इसे ऐसे रख सकते हैं. आप मैम ने चौक रखी हैं तो वो थोड़ा डायगोनल भी हो जाता है बेटा, पर आप इसके लिए स्केल भी यूज कर सकते हैं. Then check. This is the original quantity and original price, and we have original equilibrium. Now the shifts have taken place. The shifts have taken place. So what will be the price will be constant and quantity change will be there. अब हमें ये सब मालूम कैसे चल रहा है? How we are getting to know? Look, supply curve shift leftward, demand curve shift leftward. They both are equal to each other. When they are equal to each other, the first thing will means to say no excess demand. ना तो ज्यादा demand है ना ज्यादा supply है. तो ultimately they are equal. So when S is equal to D, तो no excess. जब किसी चीज का कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, so then price will be constant. When there is no excess, तो ना तो प्राइस हाइक होंगे ना प्राइस फॉल करेंगे. प्राइस विल शो नो वेरिएशन एंड देन प्राइस विल बी कांस्टेंट. बट चेक, डिक्रीज क्या हो रही है? सप्लाई. और डिक्रीज क्या हो रही है? डिमांड. यानी दोनों अपनी साइड से क्या कर रहे हैं? डिक्रीज. तो सप्लाई और ना ही डिमांड की एक्सेस है. अब जब एक्सेस नहीं है तो प्राइस पे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, तो प्राइस विल तो कांस्टेंट. पर सप्लाई और डिमांड दोनों की क्या डिक्रीज कर रही है? क्वांटिटी. चेक, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई डिक्रीजेस. हाउ इट गेट डिक्रीज? बिकॉज Q1 is moving backward to Q2 and this is E, and new intersecting point, this is E2. So look, when we draw line towards quantity na, so they both shows a variation. Look, this shows variation and this variation shows backward shift. So we are having backward decrease quantity, and price is same because no excess demand and no excess supply. So new equilibrium will be formed at E2 and market observe the quantity variation. Quantity variation. But quantity variation, but no price change. In situation number 5, quantity varies but no price change because there is no excess of supply and demand. It is equal change. So let's have a zoom look of the board. And then we were going to say thank you for visiting, and with a promise that I will see you again, and this physical classes is desperately looking forward to see you again. So please consider the concept and see you again soon. When there is equal reaction from the buyer and seller, it marks the influence of the price constant and quantity variation. So hereby we have learned shift of demand curve is equal to shift of supply curve in the decreasing phase. So let's conclude it over here, and with the promise that we will see each other again for the next phase. Thank you for visiting.